Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more updates. How to start mastering English language? That is one of the most complicated tasks for many Pakistani students because we don't have proper environment to learn English language. Now, to go into details, we have to understand what are the prerequisites for learning English language and then how to master it. अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ इंग्लिश का माहौल नहीं है. इंग्लिश में हम लिखते ज़रूर है लेकिन इंग्लिश हम बोलते नहीं हैं और हम सुनते नहीं हैं. इंग्लिश हम रीडिंग करते हैं और इंग्लिश के हम कभी कभी राइटिंग भी करते हैं लेकिन इंग्लिश का लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं है हमारे माहौल में. So for that you have to take special measures. And what are those measures which I am going to tell you here. हम इंग्लिश को कैसे सीखें? आपने कोई ज़बान सीखी है? कम से कम आपकी मादरी ज़बान तो आपने सीखी होगी, आपने उर्दू सीखी होगी. कैसे आपने उर्दू सीखी? कैसे आपने अपनी मादरी ज़बान सीखी? इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड जो है वो ये है कि नेचुरल अप्रोच आपने अप्लाई किया. नेचुरल अप्रोच. एक बच्चा अपनी ज़बान कैसे सीखता है? नेचुरल तरीके से सीखता है. 4-5 साल लगाता है लेकिन नेचुरल तरीके से सीखता है. नेचुरल तरीके से इस तरह सीखता है कि वो वहाँ माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है. तो क्या आप इंग्लिश के लिए इस तरह का माहौल बना सकते हैं? अगर आप नहीं बना सकते सो यू हैव टू टेक एडमिशन, you have to join a course, and in that course you have to write in English, you have to speak in English, you have to listen to English, and when you fulfill all these prerequisites then automatically you are an English writer, you are an English speaker and you are an English reader. But the issue is that how to create that environment. English or any other language that is skill, that is not knowledge. ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि इंग्लिश या कोई भी ज़बान जो है वो स्किल है. तो इंग्लिश जो है ये क्या है? स्किल है. अब स्किल का क्या मतलब है? हुनर है. हुनर आप कैसे सीखते हैं? करने से सीखते हैं, प्रैक्टिस करने से सीखते हैं. तो इंग्लिश जो है ये किसी भी ज़बान की तरह ये स्किल है, ये हुनर है, ये नॉलेज नहीं है. लोग समझते हैं कि मैं ग्रामर की किताबें पढ़ूंगा, मैं जो है लेक्चर सुनूंगा, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मैंने तो मेरी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी. नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि ये स्किल है. जब तक आपने खुद इसमें आप जाते नहीं हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो आप मास्टर नहीं बन सकते. So for that you must keep in mind that English language, like any other language, it is a skill, and for skill you must do. That is experiential learning. That is learning by doing. You have to write, you have to participate, you have to go into details, you have to take part. If you are not participant and you are just student, you are just listener, you are just reader, so you will never ever get command on English language. अब नॉलेज क्या है? नॉलेज तो डेटा है, इंफॉर्मेशन है. आपके पास मालूमात है कि जी अमेरिका कैसा मुल्क है, आपके पास मालूमात है कि जी अफ्रीका, बर-ए-आज़म अफ्रीका में क्या क्या होता है, आपके पास मालूमात है कि मैथमेटिक्स कैसे होता है, जियोमेट्री कैसी होती है, आपके पास मालूमात है कि अलजेब्रा क्या है. तो ये इल्म है. लेकिन लैंग्वेज इल्म नहीं है, लैंग्वेज स्किल है. स्किल का मतलब ये है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. And if you are not participant, you are not participating, then forget about mastering English or any other language. Now there are 3 prerequisites for learning English language. Number 1 is grammar. अब grammar जो है वो क्यों? Because we need spellings, we need pronunciation, we need sentences, we need phonology, phonetics, semantics, meanings of words. अब इसके लिए हमें ग्रामर चाहिए, रूल्स चाहिए. ग्रामर इसलिए चाहिए कि माहौल नहीं है. नंबर 2 prerequisite, that is vocabulary. You must have a huge collection of words, vast collection of words. You must have complete command how to use words, how to collect words, how to retain words, and how to produce words in the form of writing and speaking. So vocabulary collection, vocabulary storage, that is highly, highly essential. ग्रामर के बाद जो दूसरा प्री रिक्विजिट है, जो दूसरा फैक्टर है वो है वोकैबुलरी. आपके पास वर्ड्स नहीं है, सो हाउ यू कैन कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स. तो वर्ड्स है ही नहीं आपके पास, आपको एक चीज़ का माने ही नहीं पता, आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, तो फिर आप अंग्रेजी में कैसे आगे जाओगे? पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, ये एडवांस्ड इंग्लिश है. इसी तरह द लास्ट वन इज RPS. RPS स्टैंड्स फॉर रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स. Receptive skills means listening and reading.
Productive skills means speaking and writing, and for that you need a lot of efforts, you need a lot of energy, your time management, your focus, your dedication, your seriousness, your sincerity, because communication needs seriousness. If you are not a serious listener and I'm not a serious speaker, there will be no communication. For communication, one of the most important factor that is seriousness. How serious you are in your goal to master English language. All the best. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.